है, हमें छाता लेकर आना चाहिए था। ये लो छाता। अरे प्रकृति तुम, थैंक यू। देखिए, छाता हमें धूप से बचाता है, ठीक वैसे ही ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। हमें ओजोन लेयर की रक्षा करनी होगी। प्रकृति दीदी, क्या आप इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस पर कुछ टिप्स देंगी जिससे ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन किया जा सके? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले घर में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उसे दीवार से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। डोर कम से कम खोलें और याद रखें मौसम के अनुकूल थर्मोस्टेट सेट करना है। मैं याद रखूंगी। अब बात करते हैं एयर कंडीशनर की। नियमित सर्विसिंग और एसी का रिलोकेशन केवल ट्रेन्ड सर्विस टेक्नीशियन से ही करवाएं। जब टेक्नीशियन एसी इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर आए तो आप उससे एयर फिल्टर साफ करने की जानकारी जरूर ले लें। बाजार में कई रेफ्रिजरेंट आधारित एसी उपलब्ध हैं। सुनिश्चित करें कि सर्विसिंग के लिए यूनिट पर लिखे सही रेफ्रिजरेंट का ही उपयोग हो। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रख बिजली बचाएं। और हाँ, वर्किंग लाइफ खत्म होने पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ऑथराइज्ड रिसाइकलर को ही दें। मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। अब कमर्शियल या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वाले ध्यान दें। बिल्डिंग डिजाइन करवाते समय उसकी दिशा इस प्रकार रखें जिससे सनलाइट और ताज़ा हवा का उपयोग बिल्डिंग को मौसम के अनुसार गर्म और ठंडा करने में मदद कर सके। ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का ही इंस्टॉलेशन करवाएं। रेफ्रिजरेंट लीकेज को रोकने के लिए बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग प्लांट के रेफ्रिजरेंट लाइन जॉइंट्स और एयर हैंडलिंग यूनिट के फिल्टर का नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस करवाएं। एयर कंडीशन स्पेस में सही टेम्परेचर सुनिश्चित करें। दुकानों में जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादन के भंडारण के लिए ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट आधारित रेफ्रिजरेंट कैबिनेट्स का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। प्रण लें, इन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। ओजोन लेयर की रक्षा कर भावी पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार। On behalf of UNDP, I thank the Ministry for making us part of these celebrations of the World Ozone Day. Today signifies a day filled with optimism. The healing ozone layer shows that together we can solve our global environmental challenges. On this day, 36 years ago, and we have seen it in the video, 46 countries came together under the Montreal Protocol, committing to protect the depleting ozone layer and safeguarding human and environmental well-being. In 2009, it achieved the distinction of being the sole United Nations treaty to be ratified by all nations. Through international collaboration coupled with robust national policies, it is perhaps the most successful global environment agreement. The most recent report from the Scientific Assessment Panel to the Montreal Protocol has confirmed that ozone layer recovery is on track, and ozone levels are expected to return to the level of the year 1980 by around the year 2066, over the Antarctic, of course. So we go beyond the 2030 development agenda. It takes a bit more time, but we are on track. By HCFCs by 60%, by 2022, achieving 63% reduction. UNDP is proud to be a partner to the government of India since it joined the convention in 1992.
We are actively supporting the government's efforts to enhance technical capabilities, mobilize financial resources, document the progress made by industries and raise awareness among civil society, youth and other stakeholders. As we continue to work towards 100% phase out of ozone depleting substances, it is imperative that we do so while maintaining industrial growth. Work lies ahead of us. As we confront climate change and global warming, there is an increased need and demand for cooling, like air conditioning in schools, hospitals and workplaces. Access to cold chains is important to keep food fresh and vaccines effective. This growth in cooling must be sustainable, which means finding safe and climate-friendly alternatives to HFCs, as well as increasing energy efficiency and cooling equipment. 0.5 degrees Celsius of global temperature rise by the year 2100. Implementing energy efficient measures has been the potential to double this number. We must invest more in research and development to create more environmentally friendly and affordable alternatives. The Montreal Protocol has been instrumental and will continue to be instrumental in protecting human health, nature and climate. At UNDP, we remain committed to supporting the government, industry and civil society in its implementation and ensure a safe and sustainable future for all. I thank you. प्रकृति कितनी प्यारी है ना और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई वो सबको बताना चाहते हैं. ठीक है बच्चों, डन. आपके अपने आप से कितनी तालियां बजी. So they enjoyed the animation so much. To achieve an ozone layer which was at 1980 level. Ozone layer is being repaired, that's very heartening to note. And when you talked about MSME, well, MSME sector contributes to Change, Goensa, Fiji Forests, Isabel, my colleague from UNDP, Rashri, Aditya, and the team, and all these lovely kids who are here. I have a very special connection with Ozone Day because my journey with UNEP basically started when I was director of Ozone 98 to 2000, and I used to organize these Ozone Day celebrations. And Lina, I must say that it was so tough during those days to organize an Ozone Day. The audience used to be just 150 people in this auditorium. And I'm so thrilled to see under your leadership that you not only have a house full, but the amazing exhibition with 6,600 participants. It's unbelievable. And I think that's also because of the success that this agreement has and the universal ratification that this agreement has at a global level. I just wanted to highlight 2 or 3 things and then I'll also try to talk to the kids. That India's leadership in Montreal Protocol has been unparalleled. There has been no other developing country and developed country that has had so much of contributions to ozone agreement and the activities that have been done over the last 30-35 years. Meaning India's HPMP, and now you are in phase 3, was the very first HPMP that really looked at the climate aspects. There's no other country at that time who was even talking about it. And the fact that cold chain or energy efficiency or sustainable public procurement are integral parts of India's HPMP was a path-breaking initiative that India did. And many other countries followed. Recovery to a reality, and this can be done through the life campaign, through also the fact that parents decide a lot of things where children can have a lot of influence. So the kids here should influence their parents to go in for much greener technologies in the air conditioning and refrigeration sector. Also the fact that kids can do a very simple thing. That part of this is something that I've been working on for the last 22 years.
and I'm very thankful to Lena that for inviting Lena since we've been working very closely. And I must tell Lena that Ozone Director is one of the toughest assignments in the ministry. There's no doubt about it. Rashri, Aditya and their team are just doing a fantastic job. Thank you very much. Thank you, sir. Indeed, if we can be the voice of the global south, we can also handhold South Asian countries to produce eco-friendly ACs, as you said, we are producing. And Mission Life is a project which was started by our Honorable Prime Minister, and in our small ways, as sir mentioned, by keeping the temperature at 26 degrees and so on, we can support Mission Life and make this earth a better place to live in. Make this presentation. Ma'am. Implementation in India. Thank you very much, ma'am. ये हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो सफलता है उस पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और ये 25वां एडिशन है. बहुत मेहनत से ये इसे तैयार कर रही है. थैंक यू वेरी मच. Next on the list, stage 3 of the HCFC phase out management plan. इसका विमोचन करेंगे हमारे मंचासी अतिथिगण. Stage 3 of the HCFC phase out management plan. सरकार को बहुत मेहनत लगती है, बहुत इसे इम्प्लीमेंट करते हैं जी. बहुत And now I request our dignitaries and man in particular to release the study report on sustainable e-commerce. वैक्सीन देते हैं दूर दराज पर, अगर हम सब्जियां लाते हैं कहीं से भी तो हमें कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे फ्रेश वेजिटेबल्स देंगे और कैसे अच्छे हाल में वैक्सीन प्रदान कर सकते हैं दूर दराज एरिया में. ये उस पर ये रिपोर्ट है. और आगे बढ़ते हैं. आई रिक्वेस्ट मैम टू अनदर डिग्निटरीज टू kindly release the action plan for implementation of the recommendations of the India Cooling Action Plan for domestic manufacturing and development sector and research and development and services sector. As you just came to know, India is the only country to have an India Cooling Action Plan. So we deserve to pat ourselves and all those people in the ministry who have created this. Last but not the least, I request ma'am and other dignitaries to release the study report on public procurement policies for hiring, training and certified registration and air conditioning service professionals. Thank you very much, ma'am. अब जो भी हम चेंजेस लाते हैं तो हमें वैसे स्किल्ड टेक्नीशियन चाहिए कि उस पर ये रिपोर्ट है. थैंक यू वेरी मच फॉर दी ऑनर्स. Ministry of Environment, Forest and Climate Change to create awareness among students to protect the ozone layer. Right. And we shall now announce the prize winning entries. Are you ready? Children are ready? बहुत बधाई हो मौतवी को. Wonderful, congratulations. Congratulations. From class 9, we have got 2 rounds. Beautiful. It's a better 8.
कंसोलेशन प्राइजेस भी देते हैं, अच्छी बात है ना, थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए. So Kashi Prasad Gupta gets the consolation prize. Kashi is from class 9, St. Cecilia's Public School, New Delhi. Wow, congratulations. Vinaypal Singh, you get the consolation prize. You are in class 10, Government Multipurpose Senior Secondary School, Montreal, Punjab. Vinaypal Singh. Oh, beautiful. Veronica Jaina, you also get the consolation prize and you are in class 11, JN Public School, Bhubaneswar, Asia. Wow, that's amazing. अच्छा लगा? बच्चों को अच्छा लगा? कैसे क्रिएटिविटी एकदम निकल के आती है बच्चों की. Alright, let's move on to slogan writing competition. हमने slogan कहा था, slogan लिखिए. और उसमें भी Devanshi gets the first prize in slogan writing. Devanshi is in class 11, Darbari Lal DAV Model School. बधाई हो. Second on my list of talented girls and boys is M. Reshma. She gets the second prize. Class 9, Kendriya Vidyalaya, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Oops, wonderful. Third prize. Amara Kapoor gets the third prize. She's in class 8, Tagore International School, New Delhi. Let's go. Wonderful. Ekamjeet Singh gets consolation. Ekamjeet is in class 8, GLS Batana Kala, District Mansa, Punjab. Congratulations. Wow. Punjab. Oh, so colorful. V. Harshita gets consolation. Class 11, Coimbatore Public School, Coimbatore, Tamil Nadu. Congratulations. So colorful. Slogan writing में भी कितना कलर डालती है आप बच्चे कर सकते हो. Consolation मिला है R. Vinusri को और R. Vinusri है क्लास 8 की छात्रा. जया सीलन मेट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरई तमिलनाडु से है. Footprints लगा कि लक्ष्मी के पाँव में. Beautiful green footprints. Bhakti Gauss gets consolation. And Bhakti है class 9, Auxiliary High School, Karamsane, Goa. So congratulations to all our friends, our young faculty. Motivate Sakwe, class 10, from Andhra Pradesh. Excellent. हम environment ministry है तो हम बहुत extra packaging नहीं करते हैं. We walk the talk. Great, thank you ma'am and thank you our dignitaries. Thank you very much. We now move on to something which our children will love the most, animation. You know we have a mascot. उसका नाम पता है क्या है? बहुत अच्छा नाम रखा है, प्रकृति. अब प्रकृति क्या कहना चाहती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के बारे में सुने? The first country in the world which came out with the cooling action plan, and that has now been taken as a template by many countries. So India is a leader. And when we talk about climate, we know that nationally this is the common term. जब emissions की हम बात करते हैं तो वो हम सब की समझ में आता है कि carbon emissions को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, the future of the planet is at stake. Today, climate change is a crisis, it's an existential crisis. And we are at this very critical moment. We are the trustees of the planet. We are the people who have to protect the planet for future generations. It is our responsibility. It has to be our commitment to future generations to protect and safeguard this legacy, this wonderful earth that we live in. So how do we do it? How do we, as I said, walk the talk on climate change? And here again I will say that India is committed to balance economy and ecology. We are a developing country. हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है. विकासोन्मुख देश है, लेकिन साथ साथ ऐसा देश है जो पूरे विश्व की समस्याओं को पूरी तरह समझता है और विश्व गुरु के रूप में रास्ता प्रदर्शित करता है. और ये रास्ता, ये जो पथ है, ये न केवल हमारे
हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे किस प्रकार से हम कार्बन एमिशंस को निरंतर कम कर रहे हैं, मच अहेड ऑफ शेड्यूल। 2030 का हमारा जो कमिटमेंट था, हमने मच अहेड ऑफ शेड्यूल रिडक्शन इन दी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हम ग्रो भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ उस प्रोपोर्शन में एमिशन को हमने पूरा किया। जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनको बढ़ने के लिए उस लक्ष्य को हासिल करने का जो हमने समय रखा था अपने लिए 2030, उसे बहुत पहले 2021 में ही हमने प्राप्त कर लिया। फिर भी आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों को और बढ़ाया है। सो वी हैव कंटिन्यूअसली अचीव्ड आवर एम्बिशंस, बट वी आर सेटिंग द बार इवन हायर फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्री, वी हैव कॉन्फिडेंस in the 1.4 billion population of India that is as committed as and more committed than any citizen of the world to ensure that we fulfill this moment in destiny that we are all at, to safeguard the planet for future generations. So, last year we have increased our climate ambitions. We have set the bar even higher for ourselves. हम लगातार बढ़ते रहेंगे, विकास की गति को प्राप्त करते रहेंगे, उसमें और तेज गति से प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ एमिशंस को भी घटाने के लिए निरंतर न केवल प्रयत्नशील रहेंगे बल्कि सफल भी रहेंगे। ये हमारा विश्वास है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से देश ने एक मिशन लाइफ का मंत्र रखा है पूरे विश्व के सामने। एंड व्हाट इज मिशन लाइफ? Mission life is the difference that all of us can make, that you and I can make. And we had that small video where Prakriti, who is our mascot for Mission Life, very basic, very simple messages that Prakriti has tried to tell us, which we hope and which we are sure that all of you present today, all the youngsters who are present today, will not only believe in it, हमने रखने का प्रयास किया गया। एक तो जो टेक्नोलॉजी और साइंस और पॉलिसी, इसमें हमने क्या गति हासिल की है और किस प्रकार से आगे का रोड मैप जो राजश्री ने प्रेजेंट किया। एक बहुत अच्छा वर्कशॉप पिछले महीने हुआ था जहां इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट ऑल केम टुगेदर कि आगे का रोड मैप हमारा कॉमन एंड अग्रीड रोड मैप हो। और साथ साथ इसमें इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, तो एसी के टेम्परेचर की बात हो, एसी को के फिल्टर्स को साफ करने की बात हो, सर्विसिंग की बात हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने निजी जीवन में इन चीज़ों को अवश्य पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर्स को किस प्रकार से हम अपने घरों में प्रॉपर उसके उपयोग की तरफ बढ़ सकते हैं, ये भी मैसेजेस प्रकृति ने दिया है। एंड लाइफ, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, it is all about our choices, our behaviors. We have to protect nature. Otherwise, we can no longer assume that nature will be able to protect us. If we are bent upon ozone depletion and the ozone hole growing larger, if we are bent upon carbon emissions continuing unabated, then we can no longer protect ourselves from all manner of climate change. And that is why in our individual choices, in our behaviors, जिस प्रकार से हम waste management करते हैं, waste segregation, waste disposal, जिस प्रकार से हम अपने unused electrical products, when we no longer use mobiles or computers or televisions in our home, how do we make sure that it goes into the right recycling system? Because reduce, reuse, recycle, this is a basic mantra that all of us must believe in and must practice.